My dear students, I am Hiral Sochitra, your biology teacher. I am here for the discussion of part 2 of chapter number 2, that is microorganisms. But before we start, we will see one short clip. So please watch it and understand it properly. It's smarter to travel in groups. Enjoyed it? Okay, then what did we learn from it? United we stand and divided we fall. Very good. Now with this we are going to start the part 2 of second chapter, that is microorganism. But before I start, we will first of all summarize the previous points. That is first about the microscope. What is it? It is the instrument that help us to observe tiny organisms that are called as microorganisms. Micro का मतलब क्या है? 1 millionth part of anything. Then microorganisms are divided into 5 main categories, that is bacteria, protozoa, fungi and algae and viruses. Now based on the shape, bacteria are again divided into different groups, that is bacillus, cocci, spirilla, etc. Now we are going to discuss about the second part, that is usefulness of microorganisms and harmful microorganisms. First of all, we will discuss about the useful microorganisms. So in that first use, that is of commercial use. In that commercial use, we will discuss the term fermentation. So what is it? It is a process for the conversion of sugar into alcohol or an acid by the action of microorganisms. So let us study the fermentation process. The first use is in making curd. Here for making curd, lactobacillus bacteria are responsible. These bacteria convert lactose sugar into lactic acid. Lactose sugar कहाँ पे मिलता है? हमें मिल्क में मिलता है, ठीक है। और जब भी हम लैक्टोबैसिलस उसके अंदर डालते हैं, बाद में ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो समझो सुगर, लैक्टोज और उसमें से बना क्या? एसिड। तो दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन प्रोसेस. A protein called casein present in milk coagulates to form curd. अभी यहाँ पे समझो एसिड में तो मिल गया, मगर कर्ड जनरली कैसा होता है? थिक होता है. तो वो थिकनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैसिन प्रोटीन. कैसिन प्रोटीन को जब एसिडिक मीडियम मिलता है तब वो एकदम से थिक हो जाता है और ये थिकनिंग को बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। और इसी की वजह से हमें कर्ड एकदम से थिक मिलेगा. विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसेस चीज़ और पनीर का भी प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. अभी हम घर में कर्ड और चीज़ बनाते हैं तो ठीक है, इससे काम चल जाएगा. बट इफ़ you want to manufacture it in bulk quantity, then manufacturers also add a substance called rennet that is obtained from the stomach of young cattle, that is added to the milk to make the process faster. So बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ड और चीज़ का प्रोडक्शन मिलेगा. Now for the fermentation process, yeast is very useful microorganism. It is a microscopic fungus that ferment sugar into alcohol and carbon dioxide, and that is why it is used for the commercial production of beverages. Generally बेवरेजेस के प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो क्या है? बार्ली एंड ग्रेप्स. दीज आर दी गुड सोर्स ऑफ शुगर. Now through the fermentation process, sugar is converted into beverages, that is beer and wine.
Not only production of beverages, yeast is again very useful in preparing bakery items like bread. Yeast is also useful in bread making. It ferments the sugar into alcohol and carbon dioxide, and due to that bread becomes porous and spongy. Now we will see bread making. For that we require flour, salt, sugar, yeast cells, water to make dough. Here, after that, yeast converts sugar into alcohol and CO2 with the help of fermentation process. More and more CO2 produced, dough rises up in volume and make the bread porous and spongy. Now, can you guess what about alcohol and yeast? Are they going to be there in bread? No. Actually, we make dough at 180 degrees Celsius. So, at that high temperature, alcohol evaporates during the process and yeast cells got killed. The next commercial use of microorganism is in making vinegar, coffee, tobacco and tea. Certain bacteria are very useful for the production of this vinegar, coffee, tobacco and tea. You just need to remember the name of the product which is produced by the help of bacteria. No need to remember the name of bacteria. The next commercial use of microorganisms is in making toothpaste. For this, diatom, that is one of the algae, is used. Can you recall algae, diatoms? It is one of the unicellular algae that lives in colonies. So here these diatoms used in toothpaste to give it a gritty texture that helps in cleaning the teeth. Not only algae, some bacteria are also helping in making toothpaste. For example, Xanthomonas campestris, that is used in making toothpaste. But how? So one gum is obtained from this bacteria that is known as xanthan gum, that is used in making toothpaste. Now let us study the medicinal uses of microorganisms. In that, first we'll see about the antibiotics. Now we all are familiar with the term antibiotics. कभी भी अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है या फिर मलेरिया है, डेंगू है या फिर कोई भी आई में इन्फेक्शन हुआ, स्टमक इन्फेक्शन हुआ, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एंटीबायोटिक्स विल डू? एंटीबायोटिक्स जनरली किल्स द पैथोजेंस. पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मार डालता है. इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स कब यूज करते हैं? जब भी हमें कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तब. The first antibiotic that was discovered is penicillin, and that is obtained from a fungus named Penicillium. And दूसरी एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, both are obtained from a bacteria named Streptomyces bacteria. एंटीबायोटिक का काम क्या है? माइक्रोबियल डिजीज को कंट्रोल करना. नेक्स्ट मेडिसिनल यूज इज इन मेकिंग वैक्सीन्स. जनरली इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. मतलब कोई भी डिजीज़ को क्योर करना उससे तो बेटर है कि उसको होने ही ना दे. एंड वैक्सीन इज़ वर्किंग ऑन दैट प्रिंसिपल. जनरली होता क्या है? वेन एवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन से डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म or pathogen enters in our body produces one substance that is known as antibodies. प्लीज़ कंफ्यूज मत होना एंटीबॉडीज़ एंड एंटीबायोटिक के बीच में. एंटीबॉडीज़ वो सब्सटेंस है जो हमारी खुद की बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस. और एंटीबायोटिक्स एक दवाई है, मेडिसिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट पैथोजन. अंडरस्टूड? Okay, so these antibodies will fight and destroy the disease causing microorganisms and remains in our body for the
फ्यूचर इन्फेक्शन बाय सम ऑफ दी माइक्रोब, मतलब ये मेमोरी की तरह हमारी बॉडी में सेव हो जाता है। अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरी बार हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो इमीडिएटली ये एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देगी विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। ये कंसेप्ट है वैक्सीन का। सो वैक्सीन में होता क्या है कि जनरली इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकन्ड डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन दिस वैक्सीन is injected in our body will produce antibodies, and that antibodies will be kept inside our body as a memory. So in future whenever these pathogens again infect our body, this will kill the pathogen, these antibodies will kill the pathogens. That is what the concept. We have vaccines of several diseases like polio, cholera, typhoid, smallpox and hepatitis. नेक्स्ट यूज इज इन मेकिंग फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि हम लोग दवाइयाँ खाते हैं कैल्शियम की, सर्टेन विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, जिंक की, लाइकवाइज। तो ये फूड सप्लीमेंट को बनाने के लिए भी सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल सच एज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। दिस बोथ आर algae that are rich in protein and other nutrient, and from this algae we extract these proteins and certain nutrient as a food supplement. Apart from these, certain bacteria such as lactobacillus and Escherichia coli, that is E. coli, that is found in human body, that is specially found in small intestines. These bacteria is helpful in digestion of food, and like this way they are friendly to us, and somewhere they also destroy certain disease causing microorganisms. Now let us see the agricultural uses of microorganisms. Certain microorganisms increases soil fertility by adding nitrogen content to it, that we have already seen in first chapter about the nitrogen fixation, that is about the leguminous plant and rhizobium bacteria. That same topic we are going to learn in detail right now. So before we start, let us see one short video of nitrogen cycle. Huh? Oh. Aha. Yeah.
कुछ समझ में आया? अगर नहीं आता है तो प्लीज़ 3-4 बार ये वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली इसमें होता क्या है कि डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट कैन नॉट यूज़। फॉर दैट दे रिक्वायर सर्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड दैट इज एमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, and these nitrogen compound are converted by the process of either lightning or by the process of this nitrogen fixation. And for nitrogen fixation we require one bacteria that is rhizobium that initiate the process. And meanwhile at the end atmospheric nitrogen is converted into either ammonia, nitrate and nitrite, so that plant can utilize them and assimilate into their body.
This is what the concept of nitrogen cycle. And after the animals or plants die, one another bacterium is there, that is Pseudomonas, that convert this ammonia, nitrate or nitrite into the free atmospheric nitrogen, and that goes into the atmosphere. Likewise, this cycle continues in the nature, and that cycle is known as nitrogen cycle. Microbes are also useful in cleaning the environment. How? Through the decomposition process. What is it? So here dead bodies of plants and animals get converted into simple substances by the action of bacteria and fungi. That is what the decomposition process. Through this decomposition process, removal of dead bodies by the action of microbes keeps our planet clean, and whatever simple substances gets produced at the end of this reaction will be utilized by other plants and animals. These bacteria are also useful in sewage treatment, where they decay the waste organic matter which is present in it. Now, what is organic? It means anything which is produced by living organism is known as organic. With this, the topic of usefulness of microorganism is over. Now let us solve one in-text exercise related to that previous topics. For that, take out page number 32. On this, let's remember करके एक एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्टली विद देयर नेम. इसके लिए आपको रिफ़र करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसमें सारी इमेजेस दी है, इमेजेस को आइडेंटिफाई करो और नीचे ऐसे नाम लिखो. बट याद रखना, टेक्स्ट बुक में जो भी लिखो वो पेंसिल से लिखना है. देन सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. इन दैट वन 2 columns are given, column A and column B. Now understand it and match it properly. पहले आंसर मत देखना, अपने आप से सॉल्व करना, और अगर न समझ में आए तो आंसर देखना, ठीक है. So, what we learned in this video about the usefulness of microorganisms. Now, next topic is harmful microorganism that we will learn in another video. So, thank you and keep learning.